अस्सलामु अलैकुम डियर। आज हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की पास टेस्ट पेपर असिस्टेंट फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट जो कि 2020 में कंडक्ट किया था, इसके MCQs नंबर 51 से लेकर MCQs नंबर 75 तक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए। क्वेश्चन नंबर 51, कंप्लीट द सीरीज 3, 4, 7, 8, 11 एंड 12। अगर आप सीरीज पर गौर कर लें तो 3, 4 का डिफरेंस आएगा 1, 4, 3 का डिफरेंस आएगा 3, 7, 8 का डिफरेंस अगेन आएगा 1 और 8 एंड 11 का डिफरेंस अगेन 3 के बराबर होगा। इसी तरह 11 और 12 का डिफरेंस 1 के बराबर होगा। तो इसका मतलब यह है कि इसमें 1, 3, 1, 3, 1, 3 का पैटर्न रिपीट हो रहा है। सो 12 के बाद ऐसा नंबर आएगा जो कि 12 और नेक्स्ट डिजिट का डिफरेंस 3 के बराबर हो। सो द ओनली ऑप्शन इज 15। सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन which is 15. Question number 52. Stanley Wolpert is popular due to his biography on Muhammad Ali Jinnah. Option B is the correct option. Question number 53. Angela Merkel is the head of which country? Option B is the correct option, which is Germany. Question number 54. Who was the first Pakistani doctor who lost his life due to COVID-19 infection, posthumously awarded the Nishani-Kashmir on 17 March 2020? So option B is the correct option, which is Osama Riaz. ओसामा रियाज को कोविड-19 इन्फेक्शन के मौत के बाद निशान कश्मीर का अवार्ड दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 55. Why did the USA withdraw from the United Nations Human Rights Council in June 2018? ये ट्रम्प के दौर में हुआ था। So is the correct option that USA believed there was a bias against Israel. Question number 56. Choose the correct meaning of the idiom once in a blue moon. Once in a blue moon का उर्दू में मानी है एक बार नीले चांद में. So the option C is the correct option, on rare occasion. Option C is the correct option. Question number 57. Where is the pyramids of Giza situated? The pyramid of Giza is situated in Egypt. Option A is the correct option. Question number 58. Which one of the following is a landlocked country? Option D is the correct option. Nepal is a landlocked country. Question number 59. The overcooking of food should be avoided because it. अगर हम किसी फूड को ओवर कुक कर दें तो इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू वो डिक्रीज होगा. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, reduces the nutrition value of food. Question number 60. A fruit basket comprises of orange, peaches and strawberries. The ratio of orange to peaches to strawberries is 2:3:4. If there are 8 orange, how many total fruit atoms are there in the basket? The correct option is 36, which is the option number C. Question number 61. Who is the head of Pakistan Atomic Energy? पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी का हेड मोहम्मद नईम है जो कि 2015 में अपॉइंट हुआ था. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. Question number 62. Find the relationships similar to encourage and restrict. Option B is the correct option. Dearth surplus. Question number 63. Divide 350 into two parts in the way that on exceed other by 4. तो ऑप्शन पर अगर गौर कर ले तो 180 जमा 170 तो इस 352 आता है, तो ये तो करेक्ट हो ही नहीं सकता. ऑप्शन बी 185
एंड 165, इसमें डिफरेंस जो है वो 10 है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी 174 एंड 176, इसमें डिफरेंस 2 है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी 173 एंड 177, डिफरेंस भी 4 के बराबर है और इसका टोटल भी 350 के बराबर है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64, द फर्स्ट मुअज्जिन ऑफ इस्लाम is Hazrat Bilal Raziyallahu Ta'ala anhu. Option A is the correct option. Question number 65. What are the liquid that evaporate quickly called? Volatile liquid वो liquid होते हैं जो कि normal temperature पर भी evaporate करते हैं. So option A is the correct option. Question number 66. Panama's capital is? Option C is the correct option. Panama City is the capital of Panama country. Question number 67. What is jobri? जोबरी वर्दी में बेईमानी बददियानती को कहते हैं कि आप किसी भी पब्लिक ऑफिस को, गवर्नमेंट ऑफिस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लें। सो इसमें ऑप्शन सी कंडक्ट ऑफ पब्लिक बिजनेसेस फॉर प्राइवेट गेन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 68. Akosombo Dam is constructed on Volta River in? Option C is the correct option, Ghana. Question number 69. Earth complete one rotation on its axis in? Option B is the correct option, 23 hours 56 minutes and 4.9 seconds. Important MCQs है। Question number 70. Fill in the correct preposition I will be ready by the time you got here. Option B is the correct option, which is by. Question number 71. Which one of the following countries recently allowed the women to drive a car alone? इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, so option D is the correct option, which is none of these. एक्चुअली 2018 में सऊदी अरब ने खवातीन को फर्स्ट टाइम अलाउ किया है कि वो अकेले ड्राइविंग कर सकती है। इन्वेंट ऑफ पीसी, क्वेश्चन नंबर 72. इन्वेंट ऑफ पीसी, द शॉर्टकट की फॉर रीडूइंग द लास्ट एक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज? इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसमें कंट्रोल प्लस आर यूज होता है फिल राइट के लिए, कंट्रोल प्लस जी यूज होता है अनडू के लिए, कंट्रोल प्लस वाई रीडू के लिए एंड कंट्रोल प्लस ओ किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, विच इज कंट्रोल प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 73. लुक एट दिस सीरीज 58, 52, 46, 40, 34. What number should come next? Option B is the correct option, which is 28. Question number 74. The 18th Non-Aligned Movement Summit Conference was held on 25 and 26 October 2019 in Azerbaijan. Option D is the correct option. Question number 75. Which of the following is not a valid zoom percentage in Excel? In MS Excel, maximum zoom is up to 400%. So option D is the correct option, which is not a valid zoom.